प्रांजल पूछते हैं ईश्वर कौन है, हमें ईश्वर को याद करने से इतनी खुशी क्यों मिलती है। ईश्वर का अर्थ होता है जो सच्चिदानंद स्वरूप है और मायापति है। हम मनपति हैं, हम पति मतलब मालिक। हमारे पास मन है, ईश्वर के पास क्या है? माया। माया मतलब इल्यूजन। और मन भी एक्चुअली इल्यूजन ही क्रिएट करता, और क्या करता। फिर से जरा याद करिए उस पीपीटी को। क्या देखा था? फूल, बेबी और एक पौधा, पर असल में न फूल है, न बच्चा है, न पौधा है क्या? क्वार्क्स। ऐसे ही है तुम्हारा शरीर, खरबों खरबों अणु हैं, इन अणुओं के जोड़ से ये बना है। प्राण शक्ति ने इसका सारी फंक्शनिंग हो रही, सांस ले रहे, छोड़ रहे, खाना खाया पच रहा, चल रहे, दौड़ रहे, सो रहे, जाग रहे, पैसे कमा रहे, खेल रहे, खा रहे, पी रहे। पर ये शरीर है क्या? सिर्फ अणु, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन तुम ये देह नहीं हो। जैसे तुम ये देह नहीं हो, ऐसे ईश्वर भी सिर्फ एक देह। वहां अगर हम शरीर नहीं है तो ईश्वर शरीर है क्या? If I am not body and I am separate from body, that same principle applies on Ishvara too. Ishvara is not a body. Ishvara is not a body. So don't ever try to think that it's some form which you will see. God is not a form. Yes, all forms are happening because of Ishvara. But Ishvara is not just one form. Huh? What is the difference between Atma and Paramatma? There is no difference in between Atma and Paramatma. But the only difference is, as I said, you have mind. Paramatma has Maya. Mind is very minuscule. The capabilities, abilities are very small. But of Ishvara, the one who is reason for this whole cosmos and universe to be, you cannot create that, can you? No. But Ishvara can. But in the root, in the absolute reality of Ishvara, Ishvara is Brahma and so are you. How? For that, you will need to listen to me more, and what I am talking every day in and out, you will have to understand that. I want to ask, can spirituality only be attained by following the way in which you went? I mean, by traveling the dharmic destinations like temples and going to ashrams? Can it be attained through any other path, like choosing any other profession? Okay, any other profession. Number one, I never went seeking spirituality while traveling to dharmic destinations. No. But it happened so that all the great masters whom I met in my life were living either in Vrindavan or in Haridwar or in some remote. My Gurudev was Tyagavrutti, Vairagyavan, so he wouldn't stay at one place. He was always traveling. He would eat by seeking food from people once a day, and then be by the river, be by a canal, sleep under a tree, and he never made any institution or organization or anything like that. But then I met many Mahatmas. Now, Vrindavan, I went with the Mahatma, a great person who took me there, my first ever pilgrimage. And you know what? We were there. We did go to all the temples, but day in and day out, we would sit for hours and hours and listening to Vedantic Satsang. So even in Vrindavan, we were just listening to Vedantic Satsang and meditating for hours and hours. Hours and hours, I'm saying. 6 hours, 8 hours. We just eat a little in the daytime and then meditate whole time. And then wherever this
My Swamiji would go, we would just go along. He took us to all these great Mahatmas, and we sat with them and we heard their lectures, and we got all the blessings from them. Spirituality can be practiced by anybody while being a doctor, engineer, a CA, or this or that, because this knowledge is more about yourself. So if you have a set of sadhana to do every day, and if you listen to satsang properly, and you have understood all the secrets about Atma and Paramatma and all that, then physically, whatever is your duty you choose to do, right? You can do that, not a problem. Spirituality doesn't take you away from your job or work. अर्जुन ने जब भगवान से ज्ञान लिया तो उसके बाद बाबा जी बन गया था? लंबी लंबी जटा रख के ऋषिकेश में कहीं बैठ गया था? नहीं, वो राजकुमार रहे, वो काम करते रहे, वो युद्ध लड़ते रहे, क्योंकि क्षत्रिय थे ना, तो देश की रक्षा सुरक्षा उनके जिम्मे है। ऐसे ही आज मेरे बहुत से शिष्य आर्मी में हैं, बहुत से नेवी में हैं, बहुत से जो है एयरफोर्स में है। वो जब उनको समय मिलता है, उनकी ड्यूटी ऐसी होती, पर उनको जब समय मिलता है वो प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, मुझे सुनते रहते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हमारे कितने शिष्य, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई प्रोफेसर है, कोई दुकान चलाता है, कोई रेडी चलाता है। हैदराबाद में मेरे कुछ शिष्य हैं, वो डोसा का रेडी लगाते हैं, यम, उसके जैसा बढ़िया कोई बना नहीं सकता है, इतना बढ़िया वो बनाते हैं। लास्ट जब मैं वहाँ पर थी तो उनसे उनकी इच्छा थी कि हम आपको खिलाना चाहते हैं। मैं क्या, तो तुम कहाँ लगाते हो? हम वहाँ आते। बोले नहीं, वहाँ आप कहाँ आएंगे, आप जहाँ हैं हम वहाँ आएंगे। तो वो अपनी पूरी रेडी मेरे पास वहाँ ले आए थे। इतनी बढ़िया इडली और डोसे बनाए उन्होंने, क्या बढ़िया बढ़िया सामान खिलाया उन्होंने। और वहीं पे ना वो म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, उसमें वो हमारा भजन चलाते रहते, गाते रहते, जो ग्राहक आते उनको भी सुनाते रहते, सुन 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 गुरुमा का नया आया, सुन। अब वो आया डोसा खाने वो डोसा खाने आया, वो इडली खाने आया, तो बोले नहीं नहीं सुन, कान से सुन, सत्संग सुन, भजन सुन, कीर्तन सुन। और वो अपनी रेडी चला रहे। तुम रेडी चलाओ कि क्लिनिक चलाओ, कि लॉयर का ऑफिस चलाओ, कि सीए का ऑफिस चलाओ, तुम सब कुछ कर सकते हो। आध्यात्म तुमको उससे काटता नहीं है और अलग नहीं करता। वेदांता doesn't teaches you to be an escapist. Vedanta teaches you to be in this world very much, because as such world is an illusion. What can it harm you, and in which way it can harm you? Once you realize the truth, actually this world becomes such a beautiful place. Because you are no more separate from anybody.